वेलकम टू NIC लाइव। आज हमारे साथ हिरा हैं, हिरा सईद। हिरा सईद इज फाउंडर एंड CEO ऑफ डिजिटल डूअर्स एंड टेक गीक्स। टेक गीक्स तो एक बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिटी है, प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा लर्न करने का। ग्लोबल ट्रेंड्स, लोकल ट्रेंड्स, स्टार्टअप्स क्या कर रही हैं, टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी पर डिस्कशन, टेक्नोलॉजी पर क्रिटिक मैं बहुत ज़्यादा क्लोजली फॉलो करता हूँ और बहुत अच्छा उसका इवन न्यूज़लेटर आता है तो वो भी फॉलो करता हूँ। तो हिरा इज़ एन एक्सपर्ट विद ग्रेट एक्सपीरियंस जो सोशल मीडिया पे किस तरह अपनी प्रोफाइल को, सोशल और पर्सनल ब्रांडिंग को किस तरह बिल्ड करना है, और वो ब्रांडिंग को आप बिल्ड करते हुए किस तरह स्पेस अपने लिए बनाते हैं, अपनी कंपनी के लिए बनाते हैं, और किस तरह यूज़ करते हैं टूल्स को। सो आज डिस्कशन हम फाउंडर एंड CEO टेक गीक्स एंड डिजिटल डूअर्स हिरा से करेंगे ऑन पर्सनल एंड सोशल ब्रांडिंग। So thank you Hira for joining us. Thank you all the viewers on Facebook and on Zoom. Let's start it. Hira, over to you. Thank you so much. Assalamu alaikum everyone. असफर ने इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, सो मैं अब उस निटी-गिटी में तो नहीं जाऊंगी। माय नेम इज हिरा सईद। लोकली आप लोग मुझे शायद कुछ लोग टेक गीक्स पाकिस्तान के रेफरेंस से जानते हो। दैट्स द कम्युनिटी दैट आई बिल्ट अराउंड 2 years ago and now we are over almost 8,000 members. जो दूसरी कंपनी दैट आई रन इज द डिजिटल डूअर्स. It's a copywriting agency. By profession, I am a journalist, and then I expanded and I started working in the content industry. So now puri agency ka jo basically service model hai, that's based on writing. So yeah, ये दो छोटे काम मैं करती हूँ. उसके अलावा I also run an entrepreneurship boot camp for women entrepreneurs. That's called Caterpillars that I just recently started a few months ago. So yeah. So आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली असर ने मुझे बहुत अच्छा एक एनेक्डोट दे दिया है, विच इज किस तरह से आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं फॉर योर कंपनी, एंड किस तरह से आप इतनी बड़ी स्पेस जो कि अब बिलियन लोगों की है, जो कि एक अपनी एक सिटी बन सकती है, कंट्री बन सकती है, उसमें आप अपनी कंपनी की और अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जगह किस तरह से बना सकते हैं. So I think if I didn't like make an introduction अभी यहाँ पे सेशन का, this is like the perfect introduction कि आज हम इसमें सीखेंगे क्या. So I'm assuming कि and the session is on the very basic level. So बहुत सारे लोगों के लिए it would be like very ABC. So मैं टारगेट ऑडियंस को पहले ही जो है वो ये आइडेंटिफाई कर दूं कि this is only for those who are just struggling to get started with social media, who run their own companies, who have everything sorted out, but उनको अभी ये समझ नहीं आता कि okay, so there are like plethora of like social media platforms out there, but मुझे नहीं पता कि मुझे अपनी कंपनी का अकाउंट किस पे बनाना है, एंड क्या मैं एक ही कंटेंट कैलेंडर बना दूं और सब उसी पे जो है वो डाल दिया करूं, या फिर फेसबुक पे मेरी कंपनी का होना आई डोंट थिंक इट सर्व्स एनी पर्पस. सो इस तरह के बहुत छोटे छोटे सवाल हैं जो कि बहुत बेसिक लेवल के हैं. सो विल ट्राई टू केटर ऑल दोस क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल. जो सेशन है वो भी बेसिकली उन्हीं के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है. लेट्स स्टार्ट इट. मेरा इंट्रोडक्शन बेसिकली हो गया है. दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इट. I served corporate sector for 4 years before I jumped into the startup world. I moved to Silicon Valley for a year and a half, I think, last year, and then I came back just in August. उसके बाद फिर मैं वही कर रही थी पहले यहाँ क्या करती थी. I mean, you can like guys read up more about it on the internet. हर जगह है ये. Coming back to the session, why are we here? So थोड़ा सा ब्रीफ मैंने कर दिया है कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि सोशल मीडिया किस तरह से इवॉल्व हुआ है. पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया किस तरह का था और अब किस तरह से वो बदल गया है. द कंटेंट दैट वी क्रिएट देयर वो किस तरह का हो गया है, एंड हाउ यू एज अ स्टार्टअप, एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर, एज समबडी हु इज जस्ट डूइंग द जॉब, आप किस तरह से राइट प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं फॉर योर बिजनेस, एंड उस प्लेटफॉर्म की बेसिस पे आप कौन सी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं फॉर योर कंपनी और स्टार्टअप. एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग मार्केटिंग अप्रोच जो कि मैं हर सेशन में यूज करती हूँ. जब भी मैं मार्केटिंग और सोशल मीडिया की बात करती हूँ, आई ऑलवेज टॉक अबाउट ह्यूमन सेंटर्ड मार्केटिंग, ह्यूमन सेंटर्ड कंटेंट. इवन के if you guys will just follow some of the content that I've created, मैंने इस चीज के बारे में बहुत एडवोकेट किया है कि whenever you're generating any content created for humans, created in very simple language, ये ह्यूमन सेंटर्ड मार्केटिंग अप्रोच होती क्या है इसको भी हम लोग थोड़ा सा टच करेंगे.
and a few other things are using content to market your startup. That's my superpower. So I think that will be really easy for me, and I hope कि मैं इसको impart कर सकूँ to you all. Human to human connection किस तरह से बनाते हैं through your social media strategies and content. And end में, I mean, if time allows, because this session was only for like 2 hours, so I'm assuming कि हमारा question answer मिला के 1.5 hour में complete हो जाएगा. तो then we'll touch somehow on personal branding as well, because it's a very interesting topic as well. So we're starting with the social media. So social media की बहुत सारी definitions आपको किताबों में, आपको internet पे, आपको blogs में, and the content wherever it is, जब भी आप उससे जो है वो consume करेंगे, social media की कई बहुत सारी definition आपको मिलेंगी. ये platform है, it's a website जिसपे लोग जो है content share करते हैं, जिसपे लोग profiles बनाते हैं, जिससे लोग एक दूसरे से मिलते हैं virtually. I mean, so many definitions. बट इफ यू आस्क मी कि सोशल मीडिया बेसिकली है क्या, और अगर आपको किसी को बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझाना हो कि व्हाट सोशल मीडिया बेसिकली इज, तो आई ऑलवेज टेल देम कि सोशल मीडिया इज एन एक्सप्रेशन. सोशल मीडिया एक्सप्रेशन है किस तरह से? तो जितने भी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अभी एग्जिस्ट करते हैं, दे आर बेसिकली गिविंग पीपल अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो एक्सप्रेस कर सके देयर व्यूज. अब वो एक्सप्रेशन व्यूज का बहुत डिफरेंट हो सकता है. फेसबुक पे द वे यू एक्सप्रेस योर व्यूज कुड बी वेरी डिफरेंट as compared to the LinkedIn. एंड जिस तरह से आप LinkedIn पे अपने व्यूज, अपने करियर के बारे में, अपने माइलस्टोन्स और अपनी अचीवमेंट के बारे में एक्सप्रेस करते हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू द फेसबुक. दिस इज व्हाई व्हेन आई से कि सोशल मीडिया हैज इवॉल्व्ड अ लॉट एंड सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वर्क टोटली डिफरेंटली. तब मैं इसका मतलब ये होता है कि जो जिस तरह से आप चीज LinkedIn पे एक्सप्रेस कर रहे हैं वो फेसबुक पे नहीं चलती. जिस तरह से आप फेसबुक पे चीजें एक्सप्रेस कर रहे हैं वो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे नहीं चलती. इसलिए टू एक्सप्लेन सोशल मीडिया इन अ वेरी लाइक इजी लैंग्वेज, सोशल मीडिया इज जस्ट एन एक्सप्रेशन. एंड आप जिस तरह से अपना मैसेज अक्रॉस करते हैं ऑन ऑल दोस प्लेटफॉर्म जो एग्जिस्ट करते हैं, वो प्लेटफॉर्म फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक एंड ऑल द अदर सोशल मीडिया, आई मीन यू नेम इट एंड वी हैव इट. सो उन सब पे आप किस तरह से अपना एक्सप्रेशन यू आर गेटिंग इट अक्रॉस, वो बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग बन जाती है. सो दैट्स इट्स वेरी सिंपल. सो अपनी बहुत डिफिकल्ट और टेक्निकल डेफिनेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है. इज जस्ट ट्राई टू फील कि आपकी कंपनी है, आपका एक प्रोफाइल है, उस कंपनी की एक स्टोरी है, उसका एक एक्सप्रेशन है. जब आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स को यूज करते हुए इस मैसेज को यू स्टार्ट स्प्रेडिंग, इट बिकम्स सोशल मीडिया मार्केटिंग. सो आई मीन दिस वॉन्ट कम एज अ सरप्राइज टू यू. ये स्लाइड जिस टाइम पे I'm 27 years old right now. जिस टाइम पे I was growing up, मैंने इंटरनेट का वो टाइम देखा है जिसमें we used to use dial-up connection, जिसमें we used to have like 1 या 2 घंटे का इंटरनेट का हमारे पास टाइम होता था, जिसमें we had to do so much. हमें गाने भी डाउनलोड करने होते थे, हमें वो पॉलीफोनिक रिंगटोन्स होती हैं वो भी डाउनलोड करनी होती थी. उस टाइम पे the content we were consuming, it was really different. Maximum जो कंटेंट हम देखते थे वो बेसिकली वो एंटरटेनमेंट की फॉर्म में होता था. वो गाने होते थे, वो मे बी रिंगटोन्स होती थी, और वो गेम्स होते थे. वो सारा वो था वो कंटेंट वो था जो कि ऑडियंस को कंज्यूम करके रखता था इन टर्म्स ऑफ लाइक एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट पे और नॉलेज शेयरिंग पे और नॉलेज बेस से बहुत कम कंटेंट था. तो मैक्सिमम हमें जो चीजें मिलती थी वो फोरम्स मिल जाते थे, वो ब्लॉग्स मिल जाते थे. उसके अलावा मल्टीमीडिया फॉर्म में कोई ऐसा कंटेंट नहीं था. बट कंटेंट एज वी स्पीक राइट नाउ, कंटेंट की इतनी फॉर्म्स हमारे पास अब मौजूद हैं, स्पेशली और सोशल. मैं तभी सर्च इंजन पे जा ही नहीं रही. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया. सो आपको टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट दिखता है, आपको वीडियो बेस्ड कंटेंट दिखता है, आपको पॉडकास्ट दिखने शुरू हो गए हैं, आपको अब जो है 3D इमेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे दिखती हैं. आपको अगर कोई चीज स्टैटिक इमेजेस से नहीं करना तो आप जिप्स के जरिए से एक्सप्रेस कर सकते हैं. आपको होलोग्राम्स जो है अब नजर आ रहे हैं, आपको VR बेस्ड जो है वो एप्लीकेशन नजर आ रही हैं. सो एंड ये सब चीजें, ये सब टाइप ऑफ मीडिया इज ऑल कंटेंट. सो इफ समबडी से कि आई एम कंटेंट क्रिएटर, he or she may not just be like the person जो कि सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट लिखता है. वो कंटेंट किसी भी फॉर्म में बना सकता है, एंड वो कोई भी ऐसा कंटेंट टाइप यूज कर सकता है जिनका मैंने अभी जिक्र किया. तो दिस वाज बेसिकली टू गिव यू अ बर्ड आई व्यू कि कंटेंट किस तरह से इवॉल्व हुआ है, किस तरह से ग्रो हुआ है, एंड किस तरह से अब जो कंटेंट हम सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहे हैं वो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट है एज कम्पेयर टू व्हाट वी यूज्ड टू डू years ago. अच्छा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बहुत सारे हैं राइट नाउ. अभी मैंने इस स्लाइड में कुछ मेन ऐसे सोशल मीडिया चैनल्स कवर किए हैं जो कि शायद स्टार्टअप के लिए बेसिकली बेनिफिशियल हो.
but that doesn't mean कि इसके अलावा exist नहीं करते. I mean, I haven't included like Snapchat is Snapchat is a big company. So needless to say, अगर उससे related भी आपको कोई सवाल हो तो feel free to let me know and I'll make sure to like cater those. So we'll start with like जो हमारे सबसे obviously giant social media platforms है, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok मैंने अभी recently क्योंकि it's getting lots of traction तो मैंने अभी recently डाला है, but we'll discuss more about it in the slides later. Before like I jump into specific social media content, let's just like put some basic things first. ये कुछ मैंने टिप्स बहुत जेनेरिक सी डाली हैं, बट आई अज्यूम्ड कि जब आपके पास ये टिप्स यू हैव सॉर्टेड आउट, सो आपको स्ट्रैटेजीज बनाना, आपको डिफरेंट कंटेंट कैलेंडर पे काम करना वुड बी रियली इजी फॉर यू. सो ये कुछ टिप्स उसमें से ये हैं. ईच सोशल मीडिया साइट हैज अ डिफरेंट टारगेट ऑडियंस एंड डिफरेंट एल्गोरिथम. it's I think it's very ingrained in our mind for years के हम जो कंटेंट कैलेंडर बनाते थे, दैट कंटेंट कैलेंडर हैज टू बी लाइक फॉर सोशल मीडिया. उसमें आपने चारों प्लेटफॉर्म्स डाले, जो कैप्शन फेसबुक पे जा रहा है वही ट्विटर पे जा रहा है, वही लिंक्डइन पे जा रहा है. So it's very hard for me to convince people that it doesn't work anymore, and it shouldn't work like this. क्योंकि जो ऑडियंस फेसबुक maybe मेरे सारे चारों अकाउंट चारों चैनल्स पे हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, एवरीवेयर, but the type of content that I want to consume on each of those channels वो बहुत different है. मुझे लिंक्डइन पे आके जो है आपका डेली वाला व्लॉग देखना पसंद नहीं है, बट मुझे सोशल मीडिया पे आके हर वक्त आपके काम की बातें पढ़ना पसंद नहीं है. इसी चाहे एक ही बंदा डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो है वो यूज कर रहा है, बट द काइंड ऑफ कंटेंट ही वांट्स टू कंज्यूम ऑन दोस चैनल्स वो बहुत डिफरेंट है. So this is like tip number 1 कि we have to like come out of this fiction के हर सोशल मीडिया पे एक ही तरह का कंटेंट चल जाता है and they all work in a similar way. And number 2 tip is hashtags don't work anywhere. Hashtags basically they work really well on Twitter, वहीं से basically इसका trend start हुआ है, and they work really well on Instagram as well. But that doesn't mean कि आप हर post और हर channel जिस पे आप use कर रहे हैं उस पे you start flooding your post with hashtags. It's a very different entire topic. Hashtags होते क्या है, use किस तरह से करते हैं, and इसके पीछे ही पूरी एक साइंस मौजूद है. लोग people are literally hacking the hashtag industry to get the maximum reach of their post. तीसरा long form content does not work everywhere. So long form content basically वही होता है जिसमें you split your content into smaller chunks to make it more digestible. अब वो शायद LinkedIn में बहुत अच्छा चल जाता हो, but that doesn't mean कि people who are coming on like maybe Instagram or people who are coming on your Facebook page, they really want to like read 250 words का caption. That's debatable as well, but that's just something जो मुझे एक अच्छी लगी है डालने के लिए. Number 4 is content is greater than design. I mean, again, this is very tricky as well. Lots of companies that work in the design industry, उनके लिए जो है वो design of anything that they're posting matters. But for me and for masses, अगर आपने जो concept अपने post में बनाया है, the type of content that you're creating, if it's relatable, if it resonates well with your target audience, I don't think so कि आपको design पे कोई बहुत ऐसी rocket science चलानी होती है. Design just have to be, it only has to be like simple, it only has to be digestible, it shouldn't like scare away your target audience. That's it. वरना जो content आप उसके अंदर use कर रहे हैं, the main purpose, the main idea behind it, that has to be something really good. Experiment more with the digestible content formats like short videos. I mean, ये मैं आगे जाके थोड़ा सा समझाऊंगी भी जब हम specific social media strategy से बात कर रहे होंगे, but the basic idea of this tip is कि all those platforms उन पे आप जितना भी content calendar बना लें, but you really have to keep on experimenting different type of content on those platforms. The recent trend that I've noticed is कि लोग अब digestible content की तरफ बहुत जा रहे हैं. ये एक trend पहले आया था जिस टाइम पे हमने wines का जो है एक सर्च देखा था इन द इंडस्ट्री, जिसमें छोटी छोटी 6-7 सेकंड की छोटी वाइन्स होती थी, हम वो कंज्यूम किया करते थे. नाउ इट इज कमिंग बैक अगेन टू द सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट. हम लोग टिकटॉक्स के जरिए, छोटी वीडियोस के जरिए, दे आर मेकिंग मोर डाइजेस्टेबल कंटेंट, 15 से 45 सेकंड का. दैट डजंट मीन कि जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की वीडियोस हैं, जो इन डेप्थ आर्टिकल्स हैं, जो एडिटोरियल पीसेस हैं, इट डजंट वर्क. दे डेफिनेटली स्टिल वर्क, but this is just a trend that I noticed, so I thought to edit here as a tip. So अब हम discuss करेंगे अपनी strategies platform wise. So I mean, all of us are on Facebook. ये session में most probably भी Facebook पे live भी जा रहा होगा. So
everyone is there, हर कोई उसे यूज करता है, लोगों की, इंसानों के अलावा लोगों के अपने पेट्स के भी सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं. So needless to say कि फेसबुक यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, that's question that is out of the table, right? So फेसबुक फेसबुक पे बेसिकली बहुत डिफरेंट टाइप का कंटेंट चलता है. फेसबुक पे यू नेवर नो कब किस टाइप का कंटेंट वायरल हो जाए, बिकॉज द वे वी यूज फेसबुक नाउ is is not something more like वो एक सोशल मीडिया बचा है. It's something that is on the palm of your hand every time, everywhere you go. आप ट्रेन में जाते हुए बाहर समटाइम्स सिग्नल पे 2 मिनट के लिए रुकते हुए आप फेसबुक की फीड खोल लेते हैं. सो फेसबुक पे you're consuming content so much, and I think almost the entire day. बट देयर आर सर्टेन चीजें जो कि फेसबुक पे जिनकी रीच ज्यादा है. फेसबुक ने थ्रू आउट ईयर्स बहुत सारी चीजें ऐसी पुश की हैं जिससे ऑडियंस को ट्रेंड मिले हैं. सो व्हेन फेसबुक वाज स्टार्टिंग आउट, उस पे जो है वो नॉर्मल आपको टेक्स्ट बेस्ड पोस्ट दिखते थे. पीपल यूज्ड टू अपलोड देयर मोमेंट्स, देयर पिक्चर्स. देन फेसबुक इवेंचुअली स्टार्टेड पुशिंग लाइक वीडियोस. सो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट आया वीडियो का जिसमें पीपल वर मेकिंग लाइक स्मॉल स्क्वायर साइज वीडियोस. जब फेसबुक ने एक्टिवली अपने प्लेटफॉर्म के जरिए कोई एक टाइप ऑफ कंटेंट को पुश किया, दैट्स हाउ द एंटायर स्ट्रेटजी ऑफ सोशल मीडिया स्टार्टेड इवॉल्विंग. तो जब फेसबुक ने जो है वो वीडियोस को पुश करना शुरू किया, so we got to know, okay, so Facebook is pushing out videos more, so which means we have to work on video content. Recently, थोड़े years पहले फेसबुक ने अपनी ग्रुप्स को जो है वो पुश करना शुरू किया. It started like adding lots of feature in the groups. तो आपने देखा है किस तरह से different communities फेसबुक पे emerge हुई. So Facebook पे type of content has always been evolving. अब मुझे नहीं पता, maybe the next step is they start like using AR VR का कोई चीज, maybe they start using holograms or something. So the type of content Facebook हमेशा dictate करता है the recent trend. But what we have to understand कि Facebook का algorithm works on the engagement and on the social engagement that you have. So अगर आपकी Facebook पे अपनी personal profile बहुत limited है and if you have worked very hard in building a community, that's totally fine. क्योंकि Facebook पे आपके पास अगर 5,000 जो है friend list, आपके पास ad भी है, and if you're searching any type of content on the search bar, तो Facebook जो आपको प्रेफरेंस कंटेंट को देगा वो बेसिकली उस कंटेंट को देगा जो कि आपकी फ्रेंड लिस्ट से रिलेटेड है, जो कि आपके दोस्तों ने शेयर किया हुआ है. It won't take you to that XYZ person living in Canada sharing the exact similar post. जब जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं होगी from your circle, तब Facebook आपको वहां लेके. This is how their search algorithm works. However, the only difference है जब आप Google पे कोई चीज सर्च करते हैं तो Google आपको आपकी locality के चीजें दिखाना शुरू करता है, but it always pushes the relevant content out there. So this is why I say कि search engine और social media का algorithm it works differently. So Facebook पे जब भी आप अपनी content की strategy बना रहे हो तो number one thing you have to keep in mind कि आप content का type वो रखें that जिसकी reach Facebook पे अच्छी आती हो. And in my personal opinion, videos की Facebook पे reach बहुत अच्छी आती है. That video could be about anything. That's totally like it depends on the kind of business that you're doing, and बहुत सारे सवाल हैं उसके पीछे. But हमेशा trend वो follow करें जो कि Facebook is actively pushing, जो कि community building है in these years, videos है in previous years, and अभी next कुछ भी हो सकता है. और उसके algorithm को जो है वो दिमाग में रखें. And now the bigger question is कि a lot of like times when you're running a B2B startup, so people ask me कि none of our clients are on Facebook. I mean, हमारा तो B2B काम है, so we don't know if creating a page on Facebook is a good idea. So I mean, I always say that creating a page on Facebook is free. So I personally think everybody should do it. But आप उस पे कर क्या रहे हैं, आप उस पे जो है वो किस तरह की strategy बना रहे हैं, that totally depends on you. So I mean, I'll put a really simple example over here. So एक company है जो कि एक SaaS product बनाती है, right? Let's just say email tracker बनाती है, which is a SaaS product. और फिर जो है वो उसकी कंपनी के सारे clients जो हैं वो basically different companies हैं जिनको email trackers चाहिए होते हैं, जिनको जो है वो ये product required होती है. अब now they'll say कि what we do has to be on Facebook, but our clients do not like make purchase decisions on Facebook. But that's not the only thing that company does, right? उनका एक काम है sales लाना, and they're getting it from B2B clients. But दूसरा काम बहुत actively जिसमें उनको hiring करनी होती है. दूसरा काम ये है जिसमें उनको अपने current employees को खुश रखना होता है. एक काम ये है जिसमें उनको अपने clients का एक portfolio बनाना होता है कि आपने उनके लिए काम क्या किया है.
एक काम ये है जिसमें आपको अपने रिजल्ट्स बताने होते हैं. So while you're engaging your client somewhere else, जो कि आपकी personal meetings हो सकती हैं, networking events हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, you have to understand कि there are lots other things that are happening in the business, और आप उस particular चीज के लिए Facebook use कर सकते हैं. आपको hiring में difficulty हो रही है and you think कि most of the people that you really want to hire, they actively engage on Facebook. आप Facebook को अपने एक जो है वो hiring platform बना लें, जिसमें आप content वो डालें जो कि आपके पोटेंशियल एम्प्लॉय देखता हो. आप जो है उसको अपना पोर्टफोलियो बना दे जिसमें आप हमेशा अपने क्लाइंट्स के रिजल्ट और टेस्टिमोनियल्स डालें. आई मीन वी कैन लाइक स्पेंड एन एंटायर डे डिबेटिंग ऑन दिस, आप किस तरह का कंटेंट बना सकते हैं, बट दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ द टेबल कि इफ योर बिजनेस हैज टू बी ऑन फेसबुक और नॉट. So no matter if you're running a B2B company or if you're running a B2C company, there is always a strategy that you can follow for Facebook to utilize it maximum, because that platform is so diverse कि आपको ये बहुत सारी तरीकों से जो है वो फायदा दे सकता है. I think we spend like enough time on Facebook. So मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स डाली हुई हैं कि right now what it is ideal for community building. Definitely, I mean Facebook के group features जो बहुत expand हो गए हैं, so Facebook +1 for like community building. Social proof क्या होता है कि if somebody is like you sent an email to the client और उसको आपको सिर्फ आपकी कंपनी देखनी है how legit it is, तो वो जाएगा क्विकली Facebook पे सर्च करेगा, आपके कंपनी के पेज पे जाएगा और वहाँ वो देखेगा कि अच्छा 3 लाइक्स हैं पेज पे. 3 तो वैसे किसी के नहीं होते, 10 तो हमारे दोस्त ही होते हैं. So हम कहेगा चलो 10 लाइक्स है फेसबुक पेज पे. I don't know if I should trust this company. If they're saying, if they're expert at what they do, why do they have only like 10 likes on page? So what happened basically in story में, you've been working in the industry for so long, आपके पास skill set भी है, आपके पास expertise भी है, but आपको social media पे जो social proof था, there was lacking in it. Lots of time when people ask कि अच्छा do likes matter? Okay, so quantifiable चीजें maybe they don't matter, because it doesn't matter कि अगर आपके पास 10 लाख लोग Facebook के पेज पे हैं कि 100 हैं. What matters is how much they're engaging with it. But in an ideal universe this thing happens, but mostly जो हमारा subconscious mind है वो एक बड़े number को देखते ही it triggers कि अच्छा okay, so they've been in the industry for so long, they have like over 1 million likes on Facebook or whatever number you want to put there. So likes basically they don't matter anything in the quantifiable term, but they add like social proof to your Facebook page. And for that social proof, उसके लिए आपको लाइक्स खरीदने नहीं होते, ऑब्वियसली उसको अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी के जरिए लाना होता है. बट आपको अगर अपनी कंपनी का सोशल प्रूफ स्ट्रॉन्ग करना है, सो ऑब्वियसली लाइक फेसबुक इज द आइडियल. कोई भी बंदा आकर 2-3 ही ऐसे चैनल्स हैं जिन पे क्विकली आके आपको सर्च करता है कंपनी के बारे में, उसमें एक फेसबुक भी होता है. आपको अगर आपको ऐसे स्टार्टअप चलाते हैं जिसमें ऑडियंस का फीडबैक और उनका रिस्पॉन्स बहुत लाजमी है, जिसमें यू रियली वांट टू एंगेज विद how they're using your product और उसके बारे में discussions क्या कर रहे हैं, Facebook is the biggest and I think a perfect platform for that too. because जब भी हमें कोई रिव्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी डालना होता है, the first platform we run towards is Facebook. ट्वीट्स भी लोग कर देते हैं, बट दैट ट्विटर में ऑब्वियसली वर्ड काउंट है, बट किसी को बहुत बड़ा रैंट डालना हो, बहुत बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस डालना हो about the product that they've used, they actively like go on Facebook and post their review. So if you're collecting responses, feedback about a certain product, Facebook is the ideal platform for you. Fourth is obviously viral content and memes. I mean, most of you won't relate to it because it isn't for every industry, but अगर आपकी कंपनी की पर्सनालिटी और आपके स्टार्टअप की पर्सनालिटी इज वेरी यंग and it has lots of like humor and wit attached to it, viral and meme industry is now an entire huge industry, जिसपे आप पर्सनल लाइफ से लेकर मूवीज से लेकर शोज से लेकर एनीथिंग आप उससे जो है वायरल कंटेंट बना सकते हैं जो कि मीम इंडस्ट्री में कंज्यूम होता है. That's a debatable topic if it's for your company or not, that you have to like do your own due diligence. ऐसा नहीं हो कि आपकी कंपनी की पर्सनालिटी बहुत जो है वो और स्टार्टअप की पर्सनालिटी में वो इनकॉर्पोरेट नहीं होता है and you start making memes. But wit doesn't hurt. I mean, I personally feel कि कोई भी मार्केटिंग हो रही हो, किसी भी किस्म की हो रही हो, उसके अंदर ह्यूमर एंड विट हमेशा होना चाहिए. So these were like 4 tips. मैं पूरा घंटा इसी तरह निकाल दूँ, so I'm just switching to different platforms now. So LinkedIn, I mean, if I say that LinkedIn in Pakistan is the most underutilized platform, it won't be in like overstatement or understatement,
because I think LinkedIn has like lots of potential for people who are looking for jobs, or for startups who are looking to hire more people, and for startups who are looking to promote के life behind work basically है क्या. So LinkedIn is an excellent platform. So if you ask me what type of content works on LinkedIn पे recently long form content बहुत famous हुआ है. Long form content के बारे में मैंने आपको बताया था कि basically है क्या. Long form content is when you divide your entire blog post or maybe entire content into digestible smaller chunks, 2-3 liner के, and you post it on LinkedIn. It works really well. LinkedIn pay engagement right now is very good. So long form content, anything that relates to the career achievement, personal milestone achievement, life behind work, इस तरह की चीजें जो है, recruitment, hiring, how you take care of your employees, how your employees bring result for your company, इस तरह के जो topics हैं, it works really well on LinkedIn. And अगर आपको अपनी content strategy बनानी हो, particularly for LinkedIn, so do not try to like sell your product there because it won't work. अगर आपको sell करनी भी है, so like create an entire different sort of community over there by posting different type of content instead of like saying okay, so we sell XYZ and we make XYZ. So बात करें जो है वो employees के बारे में, how you take care of them, how you manage remote work, how you deploy different types of processes in your company, and then use LinkedIn to promote stories instead of like something else. Ideally, what kind of startups or companies should use LinkedIn? I'd ideally say if LinkedIn is a perfect platform for B2B companies. B2B companies से सबसे जो interesting part होता है basically उनकी lead generation का होता है, जिसमें they really want to get involved with different companies, जिसमें they really wanna like get in touch with different people from all over the world. और obviously आप किसी को Facebook पे तो add करके Facebook पे तो search करके add नहीं करेंगे, right? So LinkedIन is like a gold mine for everyone out there who's looking to like get in touch with XYZ from XYZ country. And उनको आप LinkedIn पे search करके you can always add like a smaller note with it and send them a request, and it's totally fine अगर आप request customize करके भेज रहे हैं. So B2B companies के लिए for their sales and for their marketing strategy and for everything else, LinkedIn works really good. Ideal for recruitment ads, that's like very basic thing. This is what LinkedIn was made for. Recruitment अगर आप कर रहे हैं, so it's a really good platform to fetch like people who are looking for opportunities. Cold contacts बारे में मैंने discuss किया कि it's very tough for you to like figure out XYZ person जो कि किसी और country में रहता है but works in a similar industry, but LinkedIn पे it's very easy to search for someone who works in a company and maybe just get connected with him or her. Company milestones, अगर आपके ऐसे हैं, आपकी कंपनी में कुछ इस तरह के प्रोसेस है जिसमें यू गिव पीपल अवार्ड, जिसमें यू रिवॉर्ड देम फॉर देयर परफॉर्मेंस. लिंक्डइन पे इस किस्म का कंटेंट बहुत चलता है बिकॉज व्हेन समबडी कम्स ऑन लिंक्डइन, he or she comes with a mindset to look for more corporate content. तो उनके लिए somebody is achieving their milestone on LinkedIn, it matters. And different sort of like news अगर आप किसी इंडस्ट्री के बारे में शेयर कर रहे हैं तो that's it. So now the third platform is Instagram. Instagram is still again, I won't say underutilized for our industry, but I personally think Instagram पे बहुत बड़ा स्टिग्मा ये अटैच है कि उस पे सिर्फ मेकअप का, लाइफस्टाइल का और बाकी आई थिंक फैशन का कंटेंट चलता है. So I personally used to think about the same कि Instagram may not be very ideal platform for the companies, but recently Instagram पे जितनी कंपनीज ने जो है वो कंटेंट बनाना शुरू किया है, लोगों ने कंज्यूम करना शुरू किया, दैट मिथ इज लाइक हैज ऑलरेडी बीन डिमिस्टिफाइड के टेक इंडस्ट्री का या फिर टेक्निकल कंटेंट इंस्टाग्राम पे नहीं चलता. स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम लाइक द डिजाइन इंडस्ट्री, आप कुछ भी ऐसा, आप डिजाइनर खुद हैं या आपकी कंपनी जो है डिजाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, there is a huge community on Instagram that is working on design right now. बहुत डिफरेंट किस्म का कंटेंट उनको सर्च करें, उनको देखें वो किस तरह के जो है वो पोस्ट बना रहे हैं. बट अभी मेरे दिमाग में बस डिजाइन इंडस्ट्री का क्लिक किया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यूट्यूबर्स जो हैं, डिफरेंट कंटेंट की इंडस्ट्री है. अगर आप ई कॉमर्स में हैं, ई कॉमर्स इज Instagram is a gold mine for people who are in the e-commerce business. So yeah, Instagram पे किस किस्म का कंटेंट चलता है? Instagram basically it was a photo sharing website when it was built. So essence उसमें अभी भी वही है.
when you'll post more faces, when you'll post more real pictures, वो Instagram पे बहुत अच्छी reach देंगी आपको. Another thing that's been really having like that has been doing really good, that is carousels. uh, Instagram पे जब आप you upload like a bunch of photos together and you swipe right, so it becomes a carousel. It works really well on Instagram because आपकी audience जो है वो engage करती है by swiping right to different images. मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे कैरोसल्स बहुत जो है वो है. सो इफ यू वांट नो कि मैं एग्जैक्टली बात किस बारे में करी, यू कैन लाइक head to my profile and see कि मैंने different types of topics पे मैं carousels बनाती है. And number 3 is obviously IGTV videos. IGTV videos is a subset of like obviously the kind of content you consume on Facebook and YouTube. But IGTV has a very different feel, has a very different vibe. Obviously जो content की थोड़ी सी logistical चीजें होती हैं, resolution and everything else is different. But like I won't like be like going there कि वो किस तरह से होता है, that's a different topic. But if you ask me कि किस तरह का content चलता है, that's like more pictures and faces, more carousels and obviously IGTV videos. Instagram का algorithm is very different from the algorithm of Facebook and LinkedIn obviously. Instagram का algorithm more works on relevancy. So if your profile speaks about it talks about only tech or maybe women in tech or maybe design industry. So Instagram जिस किस्म का content आपकी feed पे push करने की कोशिश करता है या लोगों की feed पे push करने की कोशिश करता है, वो करता है the type of profile that you have. I'm only talking about public profile. I'm not talking about those private profile जो लोग अपनी capacity में maintain कर रहे हैं. That's totally fine. So when you are on Instagram, आपकी अपनी profile is in the design industry. So Instagram जो type of content आपका push करेगा, वो सिर्फ उस industry में करेगा. So relevancy works really, really, really well on Instagram. The kind of hashtags you're using on your post and the kind of content you're posting and how much you're posting, it matters a lot on Instagram. Consistency, relevancy, and another thing that a lot of people ignore, वो बेसिकली एंगेजमेंट है कि वो समझते हैं कि सोशल मीडिया एंड स्पेशली इंस्टाग्राम इज लाइक अ वन वे स्ट्रीट वेयर यू कम एंड यू पोस्टेड योर content for the day or you post for the day and you leave and you are not basically engaging with your audience. That's a no for Instagram. If you really want to be successful with Instagram, especially for your company page, you really have to work on things that engage your audience. एंड उसमें आपको कमेंट्स के रिस्पॉन्स हो गए, उसमें आपको टाइप ऑफ कंटेंट हो गया कि आप इस तरह का बनाएं कि लोग एंगेज करें. So I mean, this was just to give you an introduction to how it is different from the other social media platforms. Who should use this? Everyone, but especially if your company or startup works directly with the customers. It's a B2C company. It works really well. अगर आप e-commerce में आपको चीजें sell करते हैं, Instagram is the perfect platform to like get started with it. I mean, I know businesses जिनकी अब तक website भी नहीं है, and they're earning like so much from Instagram just by taking orders on Instagram. So yeah, if you're in the e-commerce space, if you're selling something B2C आपकी business type है, so Instagram is a gold mine for you. Again, if you're a B2B company and you think कि अच्छा अब आपको Instagram पे presence बनानी है, so all those big companies आप उनकी pages follow करें, Facebook, Google, Amazon, they all have their Instagram presence, but what they promote is not their products over there. They promote life behind work. So they promote के company में exactly हो क्या रहा है, लोग काम किस तरह से करते हैं, why do they want to work for Amazon, why do they want to work for Google, life behind Google है क्या. एंड ऑब्वियसली अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले आप कर सकते हैं. आप जो है इंस्टाग्राम इज अ रियली गुड प्लेटफॉर्म फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. सो अगर आप किसी ऐसी स्पेस में काम करते हैं जिसमें really want to get in touch with influencers to promote your product, Instagram is the perfect place for you. And if अगर आप बहुत creative industry में हैं, so Instagram is the ideal place for you to create your mood boards. Mood boards के बारे में थोड़ा सा Google search कर लीजिएगा, होते क्या है. क्या क्या. Now Twitter. I mean, I know कि for personal account, Twitter is a very dark place. I still do not use Twitter because it affects me negatively. So personally, I don't use, but I never like underestimate the power of the platform in general. कि वो, so that question is out of the table. If it works or not, obviously Twitter is a great platform. But if you ask me what type of content works there, sorry, it's lots of distraction outside. So if you ask me what type of content works on Twitter, obviously Twitter में आपकी character limit होती है. अब उन्होंने वो थोड़ी सी हटा दी है because you can create an entire thread. But the one tweet that you post उसमें character limit होती है. So obviously you won't be like
लाइक कि आपकी वो जो कैरेक्टर स्पेस है वो jargon से और फालतू वर्ड से ऑक्यूपाई हो जाए. So your content has to be really crispy. Your content has to be like really on point. It has to have like a wit and humor to it. It has to has like have like a different start, maybe something that that tells your audience ke this is what they wanted to hear, right? एक टाइम पे, since because it's a very character limited platform, so लोग एक टाइम पे 100 ट्वीट्स भी करते हैं. हम फेसबुक पे 100 पोस्ट दिन में शेयर नहीं करते, बट हम शायद ट्विटर पे एक दिन में 100 ट्वीट्स करते हैं. इसलिए जो कंटेंट की लाइफ है वो बहुत छोटी होती है ऑन ट्विटर. अगर आपने दिन में 1 बजे ट्वीट करी है, एंड इफ दैट ट्वीट लाइक garnered attention within the next 24 hours, so you won't expect कि वो एक महीने तक आपका वो कंटेंट चलता रहेगा and stays viral. क्योंकि लाइफ उस कंटेंट की बहुत छोटी होती है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म. तो आपने एक कोई थॉट बोली, यू पोस्टेड इट, दैट्स इट. एल्गोरिथम फेसबुक सॉरी ट्विटर का इट्स मोर रियल टाइम. जैसे मैंने बताया कि लोग बहुत ज्यादा कंटेंट डालते हैं, एंड इट्स मोर, अब फर्ज कर लें कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई मैच हो रहा होता है, कोई किसी जगह पे कोई ऐसा गॉड फॉरबिड कोई इंसिडेंट हो जाता है. सो अगर आपको रियल टाइम कवरेज देखनी होती है, व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग, व्हाट एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू, आई इमीडिएटली गो ऑन फेसबुक, सॉरी ऑन ट्विटर, एंड आई सर्च विद द हैशटैग, और रियल टाइम मुझे एक फीड मिल जाती है ऑफ द कंटेंट, एंड चंक साइज कंटेंट होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है. Who should use it? Companies, especially B2C. Why I say कि B2C companies should use it? अब ट्विटर पे one trend has been like really prevalent. वो trend basically है कि customer service का. Lots of companies, especially अगर आप locally मुझसे example मांगे तो Kareem and K Electric, these two companies like took like really good use of Twitter. आप अगर किसी ऐसी स्पेस में काम करते हो जिसमें आपको ऑडियंस से फीडबैक लेना होता है, आपको अपना कस्टमर सर्विस, ऑब्वियसली जो डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड्स हैं कस्टमर सर्विस के, दे वुड स्टे ऑन प्लेस, बट आपको अगर नॉन ट्रेडिशनल मैटर में सोशल मीडिया पे एंगेज करना, एंड यू फील के it can work really well for your startup or company, Twitter works really good in that way. People actually come on Kareem's Twitter page, they tweet them, okay, so this what happened, this is my account details, and Kareem actually takes care of the issue. So अगर आप कोई ऐसे स्पेस में काम करते हैं जिसमें कस्टमर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें टेकिंग केयर ऑफ योर कस्टमर इज रियली इंपॉर्टेंट, फीडबैक और रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ट्विटर इज अ रियली गुड प्लेस फॉर यू. एंड आप स्पेसिफिकली अपना प्रोफाइल डेडिकेट भी कर सकते हैं, because I mean, I know lots of companies already do it, but what you can do is to like make your Twitter a place specific just to get the complaints, issues, concern, and try to solve them over there. So yeah, if you ask me what type of content would work there, that would be it. Very new platform. I know lots of you. It still has lots of stigma attached in Pakistan. There's a very specific set of audience. There's a very specific set of population that uses TikTok. So it may or may not be right for our platform, but time will tell. Within like a few months, or maybe few months, maybe थोड़ा कम time कह रही हूँ, maybe in like a year or two, TikTok. I mean, if you ask me about like in terms of revenues or in terms of audience or audience base, it's already there. I mean, it actively is competing against like huge platforms that we have, including Facebook and LinkedIn. But different countries में TikTok ने different तरह से जो है वो penetrate किया है. And this is why it has lots of like, it has a stigma attached to it. Okay, TikTok is not for me. And oh, so you're in TikTok, so आप हमें से नहीं है. So this stigma is soon going to like demolish. Everybody would be on TikTok, and as soon as all of us, as soon as companies, as soon as different type of people, सब TikTok पे आएंगे. Obviously, content की type change होगी. Obviously, companies would make more different, more creative content. Obviously, designers आएंगे, so they'll use TikTok differently. Content creators आएंगे, so they'll use TikTok differently. जिस तरह से TikTok की acceptance आप सबके दिमाग में obviously change होगी, and companies start adapting it, उस तरह से TikTok पे जो type of content है वो भी evolve होगा. Obviously जो main genre है content का वो is mini videos. अभी recently बहुत, अगर local example आपको चाहिए तो recently जो ये COVID-19 की वजह से एक campaign TikTok पे viral हुई थी, which was about hand washing.
That campaign is like one of the most selling campaigns. उसके stats मुझे नहीं याद है, but you can do a quick Google research to know about it. So अगर आपकी कंपनी, आपका स्टार्टअप किसी ऐसी चीज पे काम करता है जिसमें there is a public service message attached to it, जिसमें आप infotainment और entertainment को mix कर सकते हैं, and आपको कोई ऐसी campaign बनानी है that can go viral, TikTok is the ideal place to go for it. But before you step into the TikTok world and like just start organizing the campaigns, you have to really understand the algorithm. TikTok पे engagement is the way to go. इसलिए the type of, इसलिए you see के जो TikTok पे fame का बार है, जो TikTok पे content की reach का बार है, that's very different. TikTok ने उन लोगों को भी और उस content को भी जो है वो reach और engagement दी है, जो content हम Facebook और Twitter और LinkedIn पे नहीं देखते. And this is why lots of people जिनको हम stereotype करते हैं कि या जिनको हम stigmatize करते हैं कि they use TikTok, they are getting their share of engagement on TikTok. It's a very beautiful case study if you follow. So जो जिस किस्म का कंटेंट वहां पे अभी कंज्यूम हो रहा है, जिस किस्म के कंटेंट को देख के हम क्रिंज कर जाते हैं, ओके सो नो, सो माय कंपनी इज नॉट लाइक एन आइडियल, सो आर यू ऑन टिकटॉक सीरियसली? सो ये जो चीजें हैं पूरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिस किस्म का कंटेंट टिकटॉक पे आजकल चल रहा है, उस किस्म के कंटेंट को और किसी प्लेटफॉर्म ने स्पेस नहीं दी. इसलिए पीपल हु मेक कंटेंट ऑन टिकटॉक, दे आर रिक्लेमिंग that space जो कि उनको TikTok ने दी है. The kind of content they are creating and TikTok उसे reach भी दे रहा है. TikTok is making it viral because it solely works on the content that has hooks to it, that has like creative element to it. Could be anything. It could be just a normal lip sync that you're doing. So if as a company, as a startup, what you have to understand that platform is targeting millennials and Gen Z. So if millennials and Gen Z really want to consume that content, तो हम cringe कह रहे हैं, let it be. This is what they want. आप अपनी space, आप अपने उस platform को किस तरह से creatively use कर सकते हैं for your startup, that should be on you. आप jingles बना सकते हैं, आप viral campaigns बना सकते हैं, आप public service messages बना सकते हैं, and there are lots that you can do on TikTok, but the first step to actually start exploring the platform. YouTube, it's a very self-explanatory platform. I really don't have to like spend so much time on it. Sorry, we've already like covered 1 hour. What type of content works on YouTube? Obviously, videos. मैंने algorithm के बाद, relevance के बाद 4-5 गलतियां कर दी हैं, so ignore the slide. I don't know, maybe it was just my cat, not me. So obviously, who should use it? आप B2B company है, B2C company है, आप freelancer हैं, आप self-employed बंदा है, कोई भी है, आप YouTube यूज कर सकते हैं, स्पेशली फॉर लाइक आपकी, अगर आप कोई प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो नो अदर प्लेटफॉर्म बेटर देन YouTube टू क्रिएट योर प्रोडक्ट ट्यूटोरियल्स. आप कोई ऐसी कंपनी है जिसमें कस्टमर के रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं, सो नो प्लेटफॉर्म इज बेटर देन YouTube टू रिकॉर्ड देयर रिव्यूज एंड पोस्ट इट. एंड ऑल्सो जिस तरह से हमने इंस्टाग्राम पे बात की, अगर आप B2B में हैं एंड यू वांना ग्रैब द स्पेस ऑन YouTube, सो आप लाइव बिहाइंड वर्क में YouTube बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. So now, मैं अगर नाजिश, are you there? अगर हम थोड़े से questions इन slides के बारे में ले लें, अगर हैं already, before Sure, we I'm move here. forward. Yeah. Let me check if we have any questions over here. Hassan, if you can check Facebook पे अगर कुछ हैं, you can copy them here. Okay. Mm-hmm. And that's Okay, so irrelevant. I think वो बहुत पहले का होगा. yeah. That's Okay, it? Ahad, what Okay. are you typing? आपने सिर्फ लिखा है YouTube. Can you pose that as a question, maybe? Okay, he's writing the question. ठीक है. Okay, we can take it later. So we'll switch to the other thing that I discussed initially, कि किस तरह से marketing और human centered marketing के बारे में मैं बात कर रही थी. So initially जिस तरह से मैंने content की आपको example दी थी, उसी तरह की मैं आपको marketing की यहाँ पे example दूंगी. So marketing, as we were growing up,
It was just very basic. It's what the main purpose was to like identify, inform, and personify your product. जिसकी मैंने एग्जांपल दी हुई भी है कि कोका कोला किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली मार्केट किया करती थी, और किस तरह से उसने अपनी टारगेट ऑडियंस को एक डिफरेंट किस्म का वर्जन दिखाया है ऑफ व्हाट दे सेल. But marketing right now, as we speak, has evolved a lot, and it is just not about personifying and marketing your product out there. It's more in depth. Up brands and companies, they're now targeting, like they're trying to be more empathized. They're trying to tell people that they care about them. They're trying to create a human connection with customers. एंड जितनी भी बड़ी आप मार्केटिंग कैंपेन्स जो वायरल हुई हैं या जिन्होंने दैट गार्डन अ लॉट ऑफ अटेंशन, इफ यू रीड मोर अबाउट देम you'll know कि marketing has now become more of a human connection than just like selling your product out there. So marketing as we speak is all about human to human connection. This is why whether it's social media marketing, whether it's like conventional marketing, if your strategy, if the content that you're creating doesn't have any human centered approach to it, it won't get lots of it won't get the expected reach as you want. So very basic example, but definitely needed. So what makes us human? ये 3 मैंने जो है वो जो पीछे बातें की इमोशनल और हाउ ब्रांड्स रियली वांट केयर एंड एम्पैथी, उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हुई है कि ये 3 कंपनीज ने, उबर एंड स्काइप एंड स्लैक ने अपनी कंपनीज को उन ह्यूमन सेंटर्ड चीज़ों को लेके किस तरह से उनकी टैगलाइंस बनाई हुई हैं. So Uber की वेबसाइट पे, ये सब उनकी वेबसाइट से मैंने उठाई हैं, so you can go and cross check. Uber की वेबसाइट पे there's a tagline which says setting 700 plus cities in motion. I mean, Uber sells lots of other things as well. They could have written something else. But when you say कि Uber जो है वो 700 plus cities को चलाए रखता है, that has an emotional touch to it. That has a very human touch to it. We could feel the tagline instead of just reading it, right? When you say Skype makes it easy to stay in touch, that tells a lot about that Skype cares. That is, Skype has an empathy. Skype knows the importance and how important it is to stay in touch with your peers or with your friends. And when Slack says you're in a good company, it tells you कि आप एक बहुत safe space पे है. It tells you कि there's a sense of belonging with this company. So all these taglines, like they tell you the same thing जो मैंने पिछले भी marketing definition में बताई. The content that you're creating these days has to be human, has to touch the emotional chord, has to tell you care and you empathize with your target audience, and has to have a sense of belonging. And as what I believe, all these startups, and why I say every instead of like companies, startup के लिए why this tagline is, why this message is very important. जो भी startup इस दुनिया में exist करता है, it exists because of a need. It exists because of a certain problem that they identified, right? किसी ने अपनी लाइफ में वो कोई प्रॉब्लम एक्सपीरियंस की एंड दे थॉट कि दे शुड वर्क ऑन इट. किसी ने लोगों की लाइफ में वो प्रॉब्लम जो है वो एक्सपीरियंस की एंड दे थॉट कि अच्छा दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट, सो लेट मी वर्क ऑन दैट. सो हर आइडिया के पीछे देयर इज अ नीड, एंड हर नीड के पीछे देयर इज एन एंटायर स्टोरी. So when you say you don't know what to post on Facebook, your store, I mean, it's not a question. Every startup has a story, and every story has an audience. So आपके startup की story क्या है? Why you build that? What is the purpose behind it? What is the problem that you're trying to solve? How you're doing it differently? How people are doing it differently? Lots of other things. So every startup has a story, and you have to understand that your story would find its own audience. So if you're running a startup, why you can't find it is not a question. How you would find is the question. अब the bigger question is कि आपने कभी इसको obviously तवज्जो नहीं दी क्योंकि it wasn't your priority. But as I'm speaking right now, and if you're running a startup, you have to like keep on thinking about those ideas जो कि आपके mind में है, या keep on thinking about those stories. छोटी छोटी stories हो सकती हैं कि आपके दोस्त ने आपको कहा था वो company खोलने को, that you one day you were going to the university and that idea clicked to your mind. It's a story. It's a message that you can put out there. So इससे पूरी brand personality बन सकती है of your startup as well. Now coming back to the topic, how you can find your own story, how you can find your startup story basically and create a strategy out of it. It's a very simple basic model. And
as per my experience, it works for everybody. If you're a freelancer, if you're a self-employed person, if you're running a startup, or whoever you are, this small model would work for you always. Basically, first में आपको find your customer problems, बीच में मैंने डाला हुआ है choose your content type, and second पे find where they talk about the problem. So अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि what type of content you have to create on your social media, this is the simple strategy that you have to follow as a starter. आपकी कस्टमर की प्रॉब्लम्स हैं क्या? अगर आप लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल केसेस बनाते हैं आपको ये जो है उसके केसेस की आपकी कंपनी है, तो आपके कस्टमर्स की प्रॉब्लम क्या है कि जो केसेस वो खरीदते हैं वो केसेस ड्यूरेबल नहीं होते, जो केसेस वो खरीदते हैं वो एक्सपेंसिव हैं, जो केसेस वो खरीदते हैं वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है. सो ये छोटे छोटे से पेन पॉइंट्स है, राइट? आपने ये पेन पॉइंट सारे आइडेंटिफाई कर लिए एंड देन यू डिस्कस, अच्छा मैं ये 3 पेन पॉइंट्स हैं, अब मुझे कंटेंट की टाइप डिफाइन करनी है. मैं इन पेन पॉइंट्स के बारे में टेक्स्ट कंटेंट लिखना शुरू करूं, मैं इन पेन पॉइंट्स के बारे में पिक्चर्स बनाना शुरू करूं, मैं इन पेन पॉइंट्स के बारे में वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू करूं, कि मैं ऐसा क्या करूं. आपने कंटेंट टाइप डिसाइड कर लिया, यू कैन चूज एनीथिंग. एंड देन जब आपने कंटेंट टाइप डिसाइड कर लिया, फिर आप ये भी डिसाइड करेंगे कि व्हाट प्लेटफॉर्म इज द आइडियल फॉर दैट टाइप ऑफ कंटेंट, और लोग उस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं. अगर आप इसके सॉरी आई वाज अबाउट टू से इंस्टाग्राम के कवर्स, अगर आप अपने जो है वो फोन के कवर्स बनाते हैं एंड आपने उसकी पेन पॉइंट डिसाइड कर लिए, एंड देन यू नो कि ओके सो आई नो दिस ग्रुप ऑन फेसबुक कॉल्ड टेगी, जहाँ पे लोग जाके ये इश्यूज डालते हैं. So I know my target audience. I know where they talk about my problem. Now I've decided कि मैं वीडियो के बेस के बारे में बात करूंगा. The problem is sorted. You identified the problem. You identified the platform. You've chosen the content type. इसीलिए content type जो है मैंने center में लिखा है कि अगर आपने ये दोनों चीजें sort कर ली हैं, and then you're deciding the content type, that's totally fine as well. So it's more of a Venn diagram type of thing here. So this is how you can find stories. This is how you can find content. So for starters, if you don't know how to like start creating chunks of content initially, this is all you have to like think about right now. Oh, sorry. Yeah, so this is particularly for like B2B companies जिनको उस साइट पे जो है वो कंटेंट इतना नहीं डालना. So अगर आप customer oriented content nahi dalna cha rahe about their problems, or maybe you can give a mix of both as well, find stories within your startup or within your company. Jaise that is on LinkedIn, if you really want to do aapki kisi ko aapne sales ka milestone achieve kiya hai, you know कि that sales milestone is a story within your company. How did you guys do it? क्या उसकी learning थी, क्या takeaways थे, आपने उसका पूरा content बना लिया. And then आपने decide कि अच्छा where would people want to listen to that content. आपने कहा Facebook पे maybe not, maybe yes, but LinkedIn पे I know people come to like see this type of content. तो आपने अपनी company से एक story निकाली, अपने startup से एक story निकाली. You chose LinkedIn to post that story. आपने content type decide किया, text, video, image, anything, and then you posted it. So we discussed like 2 types of strategies here. One is where you're reading your customer problems and you're posting it on social media. Another is you're finding stories within your startup and you're posting on social media. So these 2 models work really well if you're starting out with your social media strategy. And that's it. Another really interesting thing, a new wave of human to human engagement, जिसकी वजह से we discussed community building जब हम Facebook के बारे में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से we discussed जो मैंने marketing example दी थी about care and empathy. So again जिस तरह का content हमने हमेशा से consume किया है और जिस तरह से वो different हो गया है, अब engagement के लिए there are different type of strategies that people are using. Community building obviously is one of them. You build communities to have a really close relationship with your customer, with your target audience. Memes जो है वो basically engagement की एक wave है. As soon as people see it's a viral trend, it's a meme, and people are actually relating with the meme, people are actually relating with that humor, they jump on that bandwagon and they try to like repurpose that one campaign जो कि काफी टाइम से चल रही है. Woke marketing basically क्या होती है, जिसके अंदर आप you're doing what you're doing exactly, but you're actually trying to show people how your startup, how your product is impacting the society, is giving people like benefit. आप कोई content creation की company चलाते हैं and you're employing lots of like single parents, you're employing lots of women. If you, or शायद
lots of you like may not know कि SDGs होते क्या हैं, but that's a very huge topic. So quickly Google search कर लिएगा. So कोई भी काम, कोई भी startup अगर आप चला रहे हैं और उसका कोई भी benefit का जो है वो दुनिया को किसी न किसी तरह से मिल रहा है, तो आपका आइडिया किसी न किसी SDG पे लाई करेगा. So ये 3 चीजें भी आप जो है वो यूज कर सकते हैं, community building, humor and work marketing, तीनों चीजें to market your startup as well. And obviously you can use that on social media too. Build a community of trust. ये जो मैंने साइकिल लिया हुआ है, जो 4 चीजों का, ये CMX का community engagement cycle है, but that helped me a lot while I was building Tech Geeks Pakistan. Community building is no rocket science, to be very honest. It's just that people were not doing it right. It's just that people do not care about it enough, and I care about it a lot. But if I had to like replace word community with something else, I definitely replace the word community with the trust. Why people engage with the community? The answer is trust. Why people want to be a part of one community? That answer is trust. Why people come back to engage with your community? The answer is trust. So when you start a space, जिसको आप community building कहते हैं, जिसको आप community कहते हैं, people come there to share their opinion. And when just because they're trusting their opinion with you, they become a loyal part of that tribe. I mean, think of it as an example. जब आप बहुत real life example मैं दे रही हूँ, आप एक कोई नई सोसाइटी बिल्ड करते हैं, किसी एक नए फ्लैट में लोग जो है वो आना शुरू होते हैं. इवेंचुअली आपको क्या जरूरत होती है? आपको जरूरत होती है कुछ ऐसी क्यूमुलेटिव चीजों की जिसमें जो प्रॉब्लम सबकी है. गैस का इशू है तो पूरी कम्युनिटी का प्रॉब्लम है. लिटरिंग का इशू है, पूरी कम्युनिटी का प्रॉब्लम है. सो व्हाट यू डू, आप जो है चंद कुछ लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिनको आप ट्रस्ट करते हैं. दे create a center, they build a community around that one apartment, right? Similar example को इंटरनेट पे जो है अप्लाई कर दें. एनी इंडस्ट्री, आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपकी कोई बहुत स्पेसिफिक नीश है, जैसे ऑटोमेटिव और समथिंग एल्स, और आपको यू हैव डिफिकल्टी इन एंगेजिंग विद योर कस्टमर. कम्युनिटी बिल्डिंग इज योर आंसर, ट्रस्ट मी. People would start trusting you as an opinion, as a thought leader. People will start trusting your space to create an opinion, and that's how you will build your tribe. So जो cycle भी बना हुआ है उसके अंदर आइडेंटिटी, ट्रस्ट, पार्टिसिपेशन एंड रिवॉर्ड. अब इसके अंदर रिवॉर्ड बेसिकली क्या होता है? रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है. रिवॉर्ड में आप जो है वो कैंपेन्स ला सकते हैं. रिवॉर्ड के अंदर आप इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स भी ला सकते हैं. सो इट्स एन एंटायर साइकिल दैट कीप्स ऑन गोइंग. एंड इफ समबडी सेज कि कम्युनिटी sorry, just a minute. And for community building, you really don't have to like spend so much time कि आप अपना पूरा प्लेटफॉर्म बनाएं, आप उस पर चीजें क्यूरेट करना शुरू करें. फेसबुक और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने कम्युनिटी बिल्डिंग को बहुत ईजी कर दिया है. इसलिए you can easily like go on Facebook, start your community. You can create community on Slack. You can start a WhatsApp group. Anything that is easier for you, but you have to do something. You have to create that circle of trust. And trust me, when you take the initiative and you start finding people who belong to the same niche, you'll find your tribe very easily. And that's nothing is rocket science in community building. ये वो बात मैंने की है जो मैंने अभी वर्क मार्केटिंग में एसडीजीज की बात की थी. ये उसकी एग्जांपल है. शुड बी बिफोर दैट. सो किस तरह से आप अपना इम्पैक्ट हाईलाइट कर सकते हैं? if somebody would say कि so we are doing this but we don't think कि हमारा कोई impact directly ऐसा आता है, that's a wrong answer. I mean, whatever you're doing in this space, in the world, has an impact anywhere. वो जॉब क्रिएशन में भी हो सकता है. आप स्पेसिफिकली विमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं तो वो कितनी गर्ल्स को आपने एम्पावर्ड किया, वो हो सकता है. आप कुछ सॉल्यूशंस बनाते हैं, SaaS प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो कितने क्लाइंट्स को आपने सर्व किया है, दैट्स एन इम्पैक्ट एज वेल. आप कोई CSR का काम करते हैं, कोई NGO चलाते हैं, एनीथिंग, कितनी लाइव्स को आपने एम्पावर्ड किया है, कितने लोगों को आपने जो है अब तक चीजें सिखाई हैं. ऑल दिस इज योर इम्पैक्ट. एंड इफ यू थिंक कि उसमें कोई नंबर अटैच नहीं करना है, सो दैट्स टोटली अप टू यू. बट यू कैन स्टार्ट I'd say measuring your impact, और आप उसको यूज कर सकते हैं into your social media की strategy as well, and that works totally fine. And when we're talking about human to human and human centered approach, this is what people want to know. If a company does XYZ or ABC thing, how exactly they are highlighting their impact, what are they, what is their contribution to the economy, to the world, and XYZ.
So for this part of the session, these are just my parting words. Empathy, understanding, and care makes us human. So being a startup founder, being an entrepreneur, or whoever you want to call yourself, you have to use human traits to sell your products, because the on the other side, what you're doing is doing for human. So this is why it is called human to human marketing. Use human traits to sell your startup or sell your idea, sell your product to a human. So that was it from this part. Agar hamare paas time bacha, so I'll touch like 2-3 uh, for like 4-5 minutes on personal branding. But if till now, if you have any questions, anything that you want to ask, feel free. Nazish, you can take questions if you have. Yeah. Hira, if you can open the chat box, उसमें एक question आया हुआ है. Okay, just a second. Okay, actually there are a couple of them. So एक इमरान ने किया हुआ है और एक आहद की तरफ से है. Just a second. मेरे पास क्वेश्चन यहाँ साइट पे आ रहा है. ओके यार. Can you shed some light on LinkedIn paid marketing for engaging the target audience for selling business solution, how it works? I mean, Mohammed Imran, I assume कि आपका क्वेश्चन है कि LinkedIn की paid marketing के बारे में, right? So to be very honest, I haven't explored LinkedIn का paid वाला paid marketing या paid advertising का इतना वो, so I may not be the right person to ask about LinkedIn paid advertisement. But if you're asking how it is beneficial, it is definitely beneficial. That is their own business model, and I personally think in these things मैंने जितने भी अच्छे webinars attend किए हैं, those are all just because of LinkedIn paid advertising. So if you're trying to explore it, it's a great platform. आज पूछ रहे हैं, I am working on creating content regarding coronavirus, but I will work on creating positive coronavirus content. It will have humor and be focused towards family to reduce stress in life. Audience feedback is negative because they say people will not follow you, but internationally it is working really well. And in India is doing fantastic job regarding corona content on YouTube. I've shared the best content on YouTube available regarding fighting coronavirus with humor. I want to make people prepared for the future and work from home, and this is the basic idea of content. Ahad, I'll watch this video later, but I got the gist of your question. So you're asking that lots of people are saying that this won't work, but have lots of people tried that this won't work? So if they haven't tried, they cannot say something about it. So this is, if you ask my general answer to this question, this is my general answer to this question. कि पाकिस्तान में उर्दू कंटेंट की बहुत ज्यादा नीड है, पाकिस्तान में अच्छे कंटेंट की बहुत ज्यादा नीड है. So if you're thinking कि you can play your part in creating content related to COVID-19, and आप उसमें humor और wit कर सकते हैं, totally go. I mean, you have my word, go for it, because one thing that we always forget while creating content, हम समझते हैं कि जब कोई एक बंदा seriously बैठ के 2 घंटे आपसे बात करेगा और वो सिर्फ स्टार्स के बारे में बात करेगा, only then the content is beneficial or is good. But what we forget that everybody consumes content differently. For many people, humorous content, memes, viral, engaging content with stars, content with lots of other graphical element to it. कुछ लोगों को वो content बहुत ज़्यादा पसंद होता है. But on the other hand, lots of people like get intimidated with lots of stuff. उनको सिर्फ एक बंदा चाहिए होता है जब बैठ के बोल रहा होता है, right? So there is no right answer to this question. If you think कि आप humor के जरिए, wit के जरिए you can create content, you will find your target audience. So you won't have to think if people would say it won't work. Once you start creating the content, you will understand that you are finding your audience automatically. There is an audience for everybody out there. There is an audience for all sorts of content. So go for it, start making it, and do not fret about it. So Ahad ka sawal tha, Imran ka sawal tha. I think that's it, Nadish, right? Anything else? कुछ Facebook पे है हमारे पास? Okay, Hassan, if you can check Facebook. यहाँ पे तो मुझे इतने लोगों के ही दिख रहे थे. Okay. ठीक है, so I think that's it.
हमारे पास टाइम कितना है? It's 12:20. ये personal branding की slide है. Should I start with this, or it's very Sure. basic, I think. So मैंने सिर्फ लास्ट में एक स्लाइड डाली थी because I was assuming that we will be short of time and presentation बहुत बड़ी हो गई थी. So if you ask me why personal branding matters, टॉपिक बहुत बड़ा है, obviously बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पे एक पूरा डिफरेंट सेशन हो सकता है. But as an entrepreneur, as a founder, if you ask me why your own personal branding matters, I'd say it definitely matters. Number one reason is the same जिसके बारे में मैंने इतनी बड़ी presentation दी, which is कि जब आप कोई human voice attach करते हैं with anything that you're selling, it is beautiful, it is remarkable. So if you're running a startup and people can relate to the founder story, people can relate to the startup owner, people can relate to why you build that product, amazing. And that's all the part of personal branding. अगर मैं कोई एक स्टार्टअप चलाती हूँ and people think of me as an opinion leader in that space, that adds lots of value to my final product. This is why when somebody talks about Apple, they always talk about Steve Jobs. When somebody talks about Microsoft, automatically जो है वो Bill Gates का नाम आता है. Which is why it is important कि जो founder है उसकी अपनी प्रोफाइल, उसकी अपनी opinions, उसकी अपनी I would say voice, it adds lots of value to the final product or the final problem that you're solving. So if you ask me why personal branding matters, your startup will eventually get a voice. जब तक आप जो है, जब तक फाउंडर है, जब तक आप पर्सनल स्टोरीज उसके अटैच नहीं करते, जब तक फाउंडर जो है वो अपनी प्रोफाइल पे काम नहीं करता, इट सीम्स लाइक अ वन वे स्ट्रीट जिसमें एक कंपनी बात कर रही है, जिसमें एक एंटिटी बात कर रही है टू द मासेस, राइट? But when you start involving your personal touch to it, your startup eventually gets a voice. Number two is which is very important. If any of you like follow Gary Vee, he talks about this part a lot. Okay, instead of like creating content, you start documenting content. So puri startup industry jo hai, basically it's very exhilarating, it's very exciting. At each turn you face difficulties, at each turn you face like setbacks. And I personally feel कि when you work on your personal branding, आपकी वो पूरी जर्नी, वो पूरे मसले, वो सारी चीजें जिससे you went through, वो डॉक्यूमेंट होती हैं. And when you document those steps, जो अगले लोग आने वाले हैं जो कि दूसरे aspiring entrepreneurs हैं, they get lots of help. So हमारे शायद इन sessions की जरूरत ना पड़े, शायद जो motivational sessions होते हैं जिसमें there is no takeaway, उनकी जरूरत ना पड़े, because you as an entrepreneur, if you are documenting your journey, and it could be like in anything, आपको उसमें हार्ड एंड फास्ट बैठ के कोई पूरी स्ट्रैटेजी नहीं बनानी होगी टू डॉक्यूमेंट योर जर्नी. यू कैन स्टार्ट विद एनीथिंग. And number three important point, because people trust people, again circling back to what we discussed earlier, you are a human, you're doing your business for other human, and once they see के इस idea के पीछे, startup के पीछे ये बंदा जो है वो associated है, they start trusting people. And it is a very common notion कि people trust people more than people trust company, right? So अगर आपका कोई endorsement आपकी best friend की तरफ से आती है, so you trust that endorsement more rather than the ad you see on Facebook, right? So this is why when startup owner, or when you start building on your own personal profile, you create that trust का connection लोगों के साथ. And this is why people will eventually start trusting what you're building as well. Again, जो हमने initially discuss किया था social proof वाली बात, you'd be more accessible. If somebody wants to get in touch with you, they know that there's a human that they can get in touch with. So it eventually everything that you're doing, everything documentation that you're doing for your personal branding, it adds into your social proof. And you as a founder would become more accessible. People would see a face behind the company, and etc etc. So this was just a very basic slide that I added क्योंकि मुझे लगा था अगर हमें टाइम बचेगा तो हम इसको टच कर लेंगे, but that's a total whole different field, इसके बारे में कभी बात कर सकते हैं. So any questions if you have, even after this session will be over, कोई question करने हो, so feel free to like get in touch with me. I would suggest कि आप जो है वो मुझे LinkedIn पे या फिर Instagram पे मैसेज कर दें instead of Facebook, या फिर हमारी TechGeeks पाकिस्तान की कम्युनिटी है जिसका मैंने जो है वो हैंडल यहाँ पे दिया हुआ है. You can go on Facebook, you can search TechGeeks Pakistan. If there is an interesting discussion that you want to have, feel free to go there and post a question. You can always message me on LinkedIn as well, and I promise that I'll be responsive there. And
either on Instagram. Do not like try to message me on Facebook or Messenger because that's a mess. And that's it. I think that's all from my side. We'll take like five more minutes if you have any question. Otherwise, we'll wrap this up. Thank you so much, Nazish and everybody else to help. No, I would also like to take this moment and thank you so much, Hira, for always being there to contribute to NIC and our startups and helping them out with everything. So let's wait for like a couple of minutes if there are any questions, either here or on Facebook, and then we'll see. Okay, so I think Sana ka ek sawal hai. Sana is asking how can we easily find business related personnel on LinkedIn? By personnel you mean like people. So I mean सबसे easiest सबसे आसान method LinkedIn पे है. So मैं अगर मेरी कंपनी का नाम अगर मैं एप्पल चलाती हूँ, मेरे कंपेटिटर्स कौन है? ओके, हुआवे है, सैमसंग है, व्हाटएवर है, एंड मुझे उन कंपेटिटर्स को के जो लोग हैं उनसे इन टच होना है. I'm just putting a like very hypothetical example. So what you can do is go on LinkedIn. तो LinkedIn की कंपनी पेज पे जाएं. कंपनी पेज के साइड पे एक बैनर आ रहा होता है, all employees who work in this company. Go to that section. LinkedIn will eventually give you an entire list about those people who worked in a similar company. और अगर आपको किसी से in touch होना है in XYZ company, you can always feel free to talk to him. That's what I do whenever I really want to get in touch with somebody on through LinkedIn. I always go to their company. किसी कंपनी के किसी बंदे को मुझे नाम नहीं पता होता उसका. So I go to the LinkedIn का company page. I check their employees. From there, I can find like if somebody's in the marketing, somebody's the graphic designer, they always have their headlines, and you can always send them a friend request. Or make sure whenever you're adding somebody on LinkedIn पे send note का option होता है, which is like a personal message that you can attach to your connection. Make sure to always use it because lots of time people won't like accept your request if they don't know you. So अगर आप उसमें custom message एक attach कर देंगे, so it will be really helpful for them. Gary, no, Salman, that's Gary V. Thank you, Marjan, for clearing it. I mean, you can search his name on any social media. He's an investor in lots of other companies as well. So it's GARYVE. I follow him very religiously. So yeah. Any other question? It's 12:19. We'll stay online till 12:25, I guess. And then we'll say bye-bye. Did I share my last screen? Now, this was my screen shared when I was talking about like last two slides? नहीं, not your contact details. या वो personal branding वाली जो बात करी थी, सब नहीं थी. अच्छा वो नहीं थी, sorry. Oh, so this was the slide. If somebody like missed it, I didn't know कि मैंने screen share नहीं की दोबारा. So this was the slide, and this was the social media के details. If somebody wanna note it down. Guys, think about questions. I mean, I'm sure questions सबके पास होते हैं. Any questions, guys? I mean, now this is somebody like looking at social media profiles. Thank you, Ahad. Social media पे check कर लेते हैं. Just a second. No, I think we're good. Okay. So if somebody has like any other questions, feel free to note down these